फाइनली राइडिंग पैंट्स भी आ गई. ह्यूमिडिटी इज सो हाई एवरी टाइम इट्स नॉट कॉफ़ी. मेरा एक बहुत अच्छा मर्चेंडाइज हमने डिज़ाइन किया है, आप लोग ज़रूर लेना. आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट. हिंट, so if you're following me on Instagram, you know my tech is going hard. Okay, when I say hard, check my new beast, the new internet setup, all because of this bad boy. 2500 के आसपास का है, which is really nice. I went with TP-Link this time, especially because it's 5 GHz. That's the main thing, and also it has MemoTech, which is really good. मेरे को बैंडविड्थ बहुत अच्छा मिल रहा है. इनफैक्ट पूरे घर में मेरे को वाईफाई अच्छा मिल रहा है. कुछ भी हो जाए तो गाइस Xiaomi TV मत लेना. ओके, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है. 2 साल में टीवी डिस्प्ले उड़ गया है, विच इज़ रियली सैड. And when I connected with them, half the price, in fact more than half price. What all we do for the vlogs. Welcome back to my YouTube channel. Today is another exciting day, and as usual I always make vlogs when it's an exciting day, especially when you're buying your action camera after ages. Yes, I am long due. I use GoPro Hero 4, which is so outdated. I went to Kandivali, a new store which provides cameras and equipments. Why am I buying Osmo? Why am I ditching GoPro? Well, if you go to see, I do have a MacBook and I have a Windows. I have an iPhone 6s and I have a OnePlus. Same way, I'll have a GoPro Hero 4 and Osmo. No, that's not the case. You'll know it. I think it's better we go on the way and then we'll chat at the store. So before I leave, I have to do laundry. Well, Instagram पे अभी भी I get the oldest boots questions before after on Instagram. Kandivali. Perfect Studio. Perfect Photo Store. Perfect Photo Store. Kandivali, near Kandivali bus station only. He didn't know मैं roll कर रहा हूँ. So yeah, we are at Kandivali and Perfect Store, right? And देख लो guys, finally Osmo आ गया. इसकी प्रॉपर डिटेल मैंने Osmo क्यों लिया. Hero 8 पे भी he was giving me a good deal. Hero 7 पे he was giving me a good deal. Hero 9 पे भी. But Hero 7 को तो ये ऑलरेडी बीट करता है, करेक्ट? Yes. And Hero 8 and उसमें you can't change the lens. Lens replaceable नहीं है. एक पत्थर उड़ा है and I'm screwed. So there were a lot of chances because being a biker you have to take care, and I thought this is in the budget, everything goes. Last night हमारी बातचीत हुई 11 बजे. We spoke and वहीं इसे कंफर्म करो तो मैं मंगाऊँ. मैंने कहा कंफर्म करो. So good guy and good, I think future also will अभी light white You're already coming near to me. So that's the thing. अभी इसका अनबॉक्सिंग ये सब तो हम यही कर लेते हैं, क्या बोलते हो? मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, anybody who can give me a Hero 9 to buy, I'm ready to buy. मैंने इंस्टाग्राम इसलिए कहता हूँ इंस्टाग्राम फॉलो करो, वहाँ पे बहुत कुछ होता है. एंड इनका मुझे मैसेज आया सडनली के वी डील विद Hero 9, आप आ जाइए. डिस्काउंट नहीं मिलता है व्लॉगर्स को, स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है. स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, खरीद रहा हूँ मैं, राइट? सो बट फिर भी कुछ तो मिल जाएगा ना डिस्काउंट. मेरे दोस्त लोग आएंगे कर देंगे. चलो कुछ ना कुछ. ऑनलाइन से तो ऑलरेडी कम में, ऑनलाइन से तो डेफिनेटली इज़ गिविंग मी लेस. एंड आई एम सरप्राइज कि अमेज़ॉन से ये मुझे काफ़ी सही मिल रहा है. अब विल डू अनबॉक्सिंग एंड एवरीथिंग. मेरा हाथ भी दुख गया पकड़ के. पेमेंट दे रहा हूँ, वारंटी भी आ रही है, बिल भी आ रहा है. yes, एवरीथिंग. जीएसटी बिल. एंड इज लाइक आप तो अनबॉक्स कर दे हो, व्हाई यू मेकिंग मी डू इट. ऐसे थोड़ा मतलब मज़ा आएगा ना करने में, राइट सर? थोड़ा मतलब वो ना आजकल जो ज़माना है ना अनबॉक्सिंग का, बताऊँ आपको, सिखाऊँ कुछ? पटको, आवाज़ निकालो, चाकू मारो, ऐसा आवाज़ आना चाहिए. Osmo you can't start video shooting immediately. You have to barcode it. A lot of people are actually repacking action camera, so be careful with that. The serial number has to match with the device. MRP चेक करो, सीरियल नंबर देखो, पैकिंग देखो, वाटरप्रूफ स्प्लैश देखो. Everything has to be there, and now let's start. I'm testing one of the Gorilla Pods. Okay, light, yeah. So this Gorilla Pod also has a locking system which is really good. It's rubberized, has bendable metal. You guys must have seen this, so I'll show you guys. So this is what comes in the box. कैमरा बाद में दिखाना होता है ना हमेशा अनबॉक्सिंग में. Okay, we'll see the camera later on. पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या. These are the keys and the USB. 360 rotational mount. 360 rotational mount with 3M tape. Battery DJI. The case is on. I told you, right? Case लगा हुआ है. ये रहा case. Yeah, I told you. इसके बिना तो they won't give. So the camera comes with the case, and finally the beauty is here. Yeah, look at this. अब ये यूज़ होगा. आई एम सो एक्साइटेड यार. ओके, सो द बैक लिड इज ओपन.
बिकॉज बार बार चेंज हो रहा है. एंड अब हम निकाल रहे हैं इसका केस. सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ही गॉट स्कैर्ड के बॉक्स में नहीं आया. सो दिस केस इज देयर विच इज इंपॉर्टेंट. आई विल शो यू गाइज. एंड दिस इज द वाटरप्रूफ ऑस्मो कैमरा विदाउट द बैटरी. आप कृपया करके बैटरी भी खोल सकते हैं. आइए, आप लोग फ्रेम में नहीं हो. द बैटरी गाइस, इसकी बैटरी में लिड बीच में आता है पीछे. कई लोगों को लगता है इससे वाटरप्रूफ नहीं होगा. इनफैक्ट इट्स द अदर वे अराउंड. नाउ इट्स परफेक्ट नाउ. देखा, इन दी एंड रिव्यूअर नहीं कर पाया. सो अभी तो बैटरी डाउन होगी. टच स्क्रीन एंड इसका स्क्रैच गार्ड मैं अभी निकालने नहीं वाला हूँ. रेडी हैज़ अ गोप्रो. हाउ कम ही इज़ गोइंग फॉर ऑस्मो, वो घर पे आके बताऊँ. मैं डिस्काउंट मांगूँ तो शायद तुम लोग मुझे दे दोगे. सो गाइज, आई एम ऑल्सो बाइंग दिस ट्राइपॉड विच आई ट्राइड. आई रियली लाइक्ड इट. इसमें दो मॉडिफिकेशंस है. बेसिकली यू कैन यूज़ अ बॉल ऑन टॉप इफ़ यू वांट टू मेक इट 360 डिग्रीज. उसके अलावा डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन हुक अप. एंड आई लाइक द ग्रिप. इट्स रबराइज. Okay, so washed my hands, washed my face. So why did I ditch GoPro Hero 9 for Osmo? Simple. First of all, this is half the price, literally around 20k. Osmo actually started picking up good business because they were launched during the Hero 7 time. Hero 7 did not even have the front screen, didn't have a lot of other things. The Rocksteady mode, all that was introduced actually by DJI. Hero 9, however, is the best of GoPro, I must say, and I'm sure it is better than this if your primary camera is GoPro. If you're going to shoot a lot of content through GoPro, I mean action cameras, then you should go for Hero 9 for sure. You can invest the right money. But if you're going to use a camera only during motor vlogs or taking some action shots, this will do justice. And I'm using Premiere Pro, which has a lot of things where I can really enhance, boost, or make it 4K lookalike, or it does shoot in HDR, but I can really do all the extra bit on the software in post-production. If you want to save post-production, you want that blasted contrast where swimming pools look more blue, skies also look blue, and but the skin actually looks a bit orangish because there's a lot of contrast. It looks really appealing when it comes to YouTube content, and that's why that stands out. Also, the resolution on the screen of the GoPro Hero 9 is much better than this, but this is quite a wider screen for visibility. Overall, this works, and I have not heard any complaints about this camera. In fact, Amit already has a Osmo, and I saw some footage with him, and he did not do anything. He just shot I think not 4K. In fact, he shot less than 4K, but you can shoot in 4K, and it looked really nice. So I need this camera for a purpose, and that's why I thought this will suffice for another 2 years, and this was a decent investment for me. Hero 4 stays with me, which will be my front camera. I've called for the scratch guard, I've called for the mic adapter. One more important point, GoPro accessories are very expensive. The Hero 9 adapter or the media mod is for 7,000 rupees. Yes, and if something goes wrong, you have to buy one more. The adapter for this is 2,000 rupees. Trust me, and it's very sleek. It just fits on the left side. You can put any mic, जो भी आपको mic डालना है आप डाल सकते. Hero 4 से तो ये upgrade ही है. In a way, I thought when I'm reaching Hero 7 level, Hero 8 level, then that's decent enough for me. Same way, I'm not using Sony Alpha, I'm using an M50. That's where I'm being a bit practical. When it comes to my laptop also, I do have a MacBook, but I do have a HP, and 90% edit of HP पे हो रहा है because I'm using Premiere Pro now. I'm not using FCP anymore. Also, the best thing, all the accessories of GoPro fit on this, तो मुझे कोई changes करने की ज़रूरत नहीं मेरे helmets पे और any mounts. It's pretty sorted. Touch screen है, 4K recording है, 1080p है, Rocksteady mode है, which you can't use in 4K obviously because crop हो जाता है. So that all I have to plan. If I compare the weight of my previous setup, it's nearly the same. इसकी हाउसिंग इतनी हैवी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. इसका माइक बार बार ख़राब होता था. यू गाइज नो अबाउट. बेसिकली वन ऑफ माई फ्रेंड्स Hero 9 एक्चुअली हैंग्स. सो ये सारी चीज़ें एक मोटो व्लॉगर के लिए, एक फिल्म मेकर के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड ऑब्वियसली action camera shots are not full lengthy 12 minutes of our videos, right? So if I'm putting a 2-minute segment by motor vlogging and I'm making 7 minutes or 10 minutes video of my other vlogging, then I think this becomes my secondary camera which I can use when I actually need it. Can't take normally SD cards. मैंने अपना normal GoPro वाला डाला है. It clearly says you'll get low clarity, night mode is off, change the SD card. मतलब demand कर रहा है ये. I have called for the adapter. This costed me 2,200, 2,199 to be precise.
Sinova, whatever, Osmo Action Dual 3.5 mm. Yes, any basic microphone can go in this. Okay, box we don't need. This is how it looks like a very nice premium brand. छोटा सा है, पिक्चर में it was so big. This is it. Can you see it? So ये इतना सा है, इसमें अपना 3.5 mm जैक जाएगा, चार्जर के लिए USB है, and this one goes in the camera which is really good. ऑल्सो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, वाइल आई एम शूटिंग मैं अपना एक्चुअली पावर बैंक इस पे लगा के शूट कर सकता हूँ विदाउट एनी हिंड्रेंस. माई मेड इज़ सो फनी सीरियसली. शी टेल्स मी आपको बुखार क्यों नहीं आया, वैक्सीन के बाद आपको बॉडी पेन नहीं हुआ, आपको खाली सिरिंज मारा रहेगा. वाई एम आई लाफिंग सो मच every time I'm about to actually close the vlog. I'm editing right now, okay? The 2 days previous vlog, आज actually 3rd day. Amazon की मेरे घर की घंटी बजती है and Amazon has got my stuff. Amazon is delivering so fast. मेरा माइक भी आ गया है guys. Okay, digital hindrance तो हमारे यहाँ आते ही रहता है. Memory card was full. Again back to the mic. Unboxing quickly. So ये है हमारा छोटा सा 250 रुपीज़ का माइक विच अपेरेंटली हैज़ द TRS. इसमें TRRS भी आता है विच वोंट वर्क, यू नीड अडेप्टर. सो दिस इज TRS एंड आई होप इट वर्क्स. तो आपके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ मैं. एंड yeah, see, that's the best part. Okay, let me show you guys. This is really cool. I don't know if you guys can see, there is a mic logo here. Okay, so the mic logo is moving around. That means the mic is working. Can you see it? Hello, check. On out here, there's a mic logo. So whenever I'm speaking, it moves up and down. That's the best part. So you know, audio recording हो रहा है. So yeah, see, it's pretty good. So the mic is working. I'm super excited. ये अब setup helmet में होगा, वो अगले vlog में होगा, promise. Because मैं जब भी ये vlog को close करने जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो रहा है. So I hope this is done and this is my new setup. देखना अब क्वालिटी कैसी है. बाय.